So this is the second part of the Euler's theorem on the motion of rigid bodies. So let's get started. Statement: the general displacement of a rigid body with one point fixed is a rotation about the same axis. So हम ये पढ़ चुके हैं. अगर हम एक एक्सिस को फिक्स्ड लेके एक बॉडी को रोटेट करेंगे तो वो बॉडी सेम एक्सिस पे ही रोटेट होगा. साइलेंट फीचर्स ऑफ Euler's theorem. If the fixed point is taken at the origin or body set of axis, then the displacement of the rigid body involves no translation of the body axis. The only change is its orientation. मतलब अगर हम एक एक्सिस ले ओरिजिन से और बॉडी सेट ऑफ एक्सिस ले, देन जो डिस्प्लेसमेंट होगा रिजिड बॉडी का वो ओनली ट्रांसलेशनल होगा. बस उसके ओरिएंटेशन में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, वो सेम ही रहेगा. जस्ट वो वन प्लेस से अनदर प्लेस जाएगा. So the body set of axis at any time t can always be obtained by a single rotation of the initial set of axis. So अगर हम initial set of axis जो x, y and z है उसको सिंगल टाइम रोटेट करेंगे तो हमें बॉडी सेट ऑफ एक्सिस मिल जाएगा. In other words, matrix A describes the physical motion of the rigid body in a rotation. So हमने जो मैट्रिक्स A निकाला है, that is BCD, that describes the rotation of the rigid body. Now it is characteristic of a rotation that one direction, namely the axis of rotation, is left unaffected by the operation. So as we said, जिस एक्सिस पे वो रोटेट होगा वो अनअफेक्टेड रहेगा बाय द ऑपरेशन. थर्स एनी वेक्टर लाइंग अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन मस्ट हैव द सेम कंपोनेंट इन बोथ द इनिशियल एंड फाइनल रोटेशन. सो अगर वो सेम ही रहेगा एक्सिस तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में उसका कंपोनेंट सेम ही रहेगा एंड हमारे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा. दैट कैन बी प्रूव्ड बाय ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन. Hence, Euler's theorem will be proved if there exists a vector r having the same components in both the system. So हम Euler's theorem prove कर पाएंगे if हमारा r वेक्टर जिसको हमने फिक्स्ड लिया है उसके components दोनों सिस्टम में सेम ही रहेगा. That means r dash is equal to a r and a is a complex number. So हमें चाहिए r dash is equal to r. Then the Euler's theorem will be proved. The corresponding general equation is r dash is equal to ar is equal to lambda r. So अगर हमारा a is equal to lambda हो जाएगा, which may be a constant, and it's called eigenvalue. Now the Euler's theorem can be restated as the real orthogonal matrix specifying the physical motion of a rigid body with one point fixed has an eigenvalue plus 1. So this means whenever we take the rotation of a rigid body by taking one axis fixed, हमारा eigenvalue plus 1 आना चाहिए. Any real orthogonal 3x3 matrix with determinant plus 1, that is a proper rotation matrix representing a rigid body motion in 3D with one point fixed, always has an eigenvalue of 1. So for a proper rotation matrix हमारा eigenvalue हमेशा plus 1 आना चाहिए. That means for any 3D rigid body rotation there exists an axis that remains unchanged. This is the axis of rotation. So let the matrix A be this one. So A is the rotation matrix. ये सिंपली हमको डिस्क्राइब कर रहा है कि जब बॉडी रोटेट हो रहा है तो वो 3 एक्सिस के साथ क्या हो रहा है, वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं. सो दिस R इज़ आइगन वेक्टर और रोटेशन वेक्टर जिसको हमने फिक्स लिया है, जिसके अराउंड वो बॉडी मूव कर रहा है. So AR is equal to lambda r. That means matrix A into vector R should give us eigenvalue and eigenvector. Or we can also write it as A minus lambda I
I is identity cross r vector is equal to 0. That is our equation 1. Equation 2 will become a minus lambda is equal to 0. So this is the characteristic or secular equation. And अगर एक मैट्रिक्स A orthogonal है, then it should satisfy A transpose A is equal to identity. Since it's a proper rotation, so A should be +1. It means the orientation is preserved. मतलब उसके coordinates कुछ change नहीं होंगे. So we want to check whether lambda is equal to +1. So let's substitute that value in equation 2. So it becomes 1 minus I is equal to 0. So अगर ये हमारा invertible rotation होता, then हमारा R is equal to 0 होता. But it's not invertible, so R exists. So if we put the R, A minus I, R is equal to 0. And here it's vanishing. It's equal to 0 when lambda is equal to +1. So it proves that the eigenvalue of eigenvector R should be +1. That is, the axis of rotation is fixed. Thanks for watching. See you next time. Bye.